Yes, Kaushalji, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you can start your video. Yes, I'm doing that. Yes. So, am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, good afternoon to all, and I welcome all of you to today's session. As all of us are emerging startups, so as per my opinion, only a successful entrepreneur will be your best mentor. So today we are fortunate enough to have one of the successful startups incubated at CIRCOT R-ABI only. So I welcome Mr. Kaushal Dongare, who is co-founder of Paawak Foods. And instead of giving an introduction in terms of educational background, degrees, etc., as an entrepreneur, I would like to introduce him in terms of business terms. So he's a part of business venture having a turnover of rupees 4 crore per year. Their enterprise, Messrs Paawak Foods, is present in DMart, Big Basket, and in many local stores of Maharashtra. And their presence is prominent in Mumbai, Navi Mumbai, and Pune region. And soon they are expanding their business beyond the boundaries of Maharashtra. They are employing around 20 people and they are growing at a very handsome rate of growth. So now I request Kaushalji to take over the dais and share his experience with our agri startups. Kaushalji, please. Right, sir. So I'm just trying to get my camera. Just a second. I think your camera is on, sir. It shows that your camera is on. Actually, everybody should. I request Kaushalji to start his camera because he looks very handsome. You can say that. No, the thing is, sir, I'm just trying my best. 1 sec. Yes. I'll just try for 2 minutes, else I'll try to join from my other. Okay. Just give me okay, sir. Okay. No problem. No problem. Meanwhile, you can continue just orally. Yes. Yes. Just give me 2 minutes. I'll join from other instrument, please. Please. I'll be back in 2 minutes, please. Okay, sir. Okay. Thank you. Meanwhile, I'll just tell all of you that he is our incubatee in second cohort. They are in making and marketing of chemical-free jaggery, and they have bestowed with grant in aid of rupees 15 lakh rupees as a grant in aid under RKBI Raftar. So their success story will obviously help you to grow your business, and as they are in food product, so all the food processing agri startups, they can listen this lecture very carefully. All his aspects will be very much useful for you people. He's joining in few minutes. Yes, Kaushalji. All right. Yes, sir. Am I visible now? Yes. Right. Yes. Right, sir. Shall I start then? Yes, please. Please, you can start. Good evening, everyone, and thank you, CIRCOT team, for this invitation. And to be honest, you all have been very supportive right from the start. I'm sure all the startups present here, उनको भी जल्दी ये experience मिलेगा कि आपकी तरफ से support क्या रहा है और क्या रहेगा future में. I just want to be very honest with my story और किस तरह से मैं बोल रहा हूँ. So maybe you may not find it very interesting और थोड़ा सा मसाला वगैरह नहीं है. Just want to be brutally honest. जो भी मेरा journey रहा है वो सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ.
तो एक 6-7 साल हो गए पावक शुरू करके, और इसके पहले बेसिकली मैं 21-22 की उम्र तक मैं क्रिकेट खेलता था फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 एंड वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। सो 8-9 साल काफी क्रिकेट में ध्यान दिया, और फिर एट द एज ऑफ 21-22 जब नहीं छोड़ना चाहिए था तब छोड़ा, मेनली बिकॉज तभी मैं उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं था जितना मैं अभी हूँ। एंड उसके बाद कुछ 3-4 अलग अलग वेंचर्स में कोशिश की टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर, मतलब कुछ पार्टनर सही नहीं थे या सही गाइडेंस नहीं मिला, उस वजह से मैं नहीं कर पाया। डैड गवर्नमेंट सर्वेंट थे, so और and I'm from a Maharashtrian background, so I'm a commerce and law graduate. So being from a conservative background, डैड का हमेशा से ये कहना था कि कहीं पे एमएनसी में कोई जॉब वगैरह कर ले, इट इज बेटर। हमारे इसमें किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि क्रिकेट ने एक चीज दिया था कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस और हार्ड वर्क करने का जो कैपेबिलिटी है वो सिखाया था। सो आई ऑलवेज थॉट इफ आई पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स in my own venture, I'll definitely sooner or later I'll succeed in my vision of being an entrepreneur. तो आफ्टर एज आई सेड एक 4-5 इसमें ट्राई करने के बाद मैंने सोचा कि एग्रो फूड्स में काफी अच्छा स्कोप है, यहाँ पे जरूर कुछ हम लोग कर सकते हैं। सो ये सब होने के बाद एक बार मैं डैड के पास गया और डैड को बोला कि डैड मुझे कुछ एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स में कुछ करना है। सो उन्होंने बोला कि कुछ अगर तुझे उसमें कुछ करना है तो उनके पहचान के मेरे डैड के फ्रेंड है डॉक्टर प्रबोध हल्दे, हु इज माय मेंटोर, तो उनसे जाके पहले गाइडेंस लेना कि तुम्हें क्या करना है वगैरह। जब मैं उन्हें मिलने गया तो उनको मैंने बताया कि मुझे प्रोडक्शन में वगैरह काफी इंटरेस्ट है, कोई भी चीज प्रोडक्शन फैक्ट्री वगैरह मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो बोला कि सर आप मुझे कुछ बताइए जिससे मैं कुछ किसी चीज के प्रोडक्शन में वगैरह जा सकता हूँ। तो तभी उन्होंने मुझे बोला कि कौशल, कोई भी बिजनेस में अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाउ टू सेल, हाउ टू लर्न टू सेल समथिंग। सो उन्होंने बोला कि तू पहले कुछ भी बेचना सीख, एंड एज अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन देन यू कैन थिंक ऑफ getting into production. Of course, it doesn't, apply to each and every product or each and every field. So I'm just sharing my journey, किस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया and how I move forward. और उन्होंने बोला कि सिंस मतलब माय नेटिव प्लेस इज कराड़, तो कराड़ इज अ पार्ट ऑफ कोल्हापुर बेल्ट। उन्होंने बोला कि बहुत सारे कमोडिटीज जैसे शुगर, राइस में ब्रांड बने हैं, लेकिन जैगरी में किसी ने अपना ब्रांड वे बैक इन 2014 किसी ने सोचा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि एक अनटैप्ड मार्केट है, अगर इफ यू हैव द पेशेंस एंड परसिवरेंस यू कैन बिल्ड अ ब्रांड इन दिस। बट ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने बोला कि अगर तू हाफ के जी 1 kg ब्लॉक्स बनाएगा तो देयर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स, सो तू नाम नहीं कर पाएगा। उन्होंने बोला कंज्यूमर सर्वे करो, जो इनके पेन पॉइंट्स क्या है वो समझो, कंज्यूमर्स के पेन पॉइंट समझ लो, एंड देन वर्क ऑन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और क्या कर सकते हो। एक कंज्यूमर सर्वे किया, कंज्यूमर इंसाइटिंग की। सो कंज्यूमर से एक पता चला हाउसवाइफ्स वगैरह जो है ये हाफ के जी 1 kg ब्लॉक्स जो है उसको ब्रेक करना एक बड़ा चैलेंज था। हाइजीन और क्वालिटी के इश्यूज थे। So a lot of times housewives were wanted to use jaggery, but inconvenient size की वजह से उसको जो तोड़ना है, उसको स्टोर करना वगैरह इज अ चैलेंज, इसलिए वो चीनी यूज करते थे। So we saw an opportunity there, and then Dr. Prabhu told me that you should come up with small jaggery cubes hygienically packed in PET jars, and that is when we introduced these jaggery cubes. Paawak naam se. We have these small cubes of 12 to 15 grams. This is how we entered the market. Kaushal ji, your mic is mute, I think. Sorry? Yes. Now it's okay. Oh, right. So उन्होंने basically start से ही बोला कि have a mindset of building a FMCG brand. So we had a set margin for the distributors, for the retailers, and we broke the the system which was prevalent then of going through the mandi system, or
we went to the retailers. As you know, when you start, आप ही retailer हो, आप ही salesman हो, आप ही courier वाले हो, driver भी आप ही हो, delivery boy आप हो, accountant आप ही हो, most of the cases में. So जब start किया तभी वैसे ही था. So एक कुछ डब्बे बनाए और I went to some shopkeepers. So we priced the product at 80 rupees half kg, जबकि so 160 rupees a kg product हो गया. And तभी good almost 50-60 rupees, आज भी 70-80 rupees a kg में मिलता है, लेकिन तभी कुछ 50-60 रुपए किलो में मिलता था. And सब retailers का यही कहना था कि the consumers नहीं लेंगे, गुड़ कभी इतना महंगा बिक नहीं सकता है. एक ठाणे के एक बहुत बड़े व्यापारी है, उन्होंने तो मुझे बोला था कि मैं अपनी टोपी निकाल के रख दूंगा बॉस तुम्हारे सामने अगर तुमने ये गुड़ बेच के दिखाया तो. आफ्टर ट्राइंग टू कन्विंस अ फ्यू स्टोर कीपर्स, एक दो जनों ने अग्री किया कि ऑन द कंडीशन कि हम लोग वापस ले लेंगे. मैंने उनको वही बोला कि कंज्यूमर इज द किंग, आप थोड़े प्रोडक्ट्स रख के देखो, अगर नहीं बिकते तो विल टेक इट बैक. तो उस कंडीशन पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स रखे. एंड एज आई सेड कि देयर वाज अ नीड फॉर दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट. और धीरे धीरे आज मतलब मुंबई में हमारा जो सेटअप है, ऑलमोस्ट ऑल द रिटेलर्स हु हैड टर्न्ड अस अवे या रिफ्यूज्ड टू कीप देयर प्रोडक्ट्स आर डूइंग बिजनेस विद अस. इनिशियल पीरियड ऑब्वियसली कुछ 1000 जार्स बनाए थे, 500 किलो का प्रोडक्ट किया था. तभी लगता था कि ये प्रोडक्ट स्केल कर पाऊंगा, क्योंकि जैगरी इज अ पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. सो प्रोडक्शन उतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी एक चैलेंज था. कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है लाइक शुगर में जैसी है. आज भी कोई ऐसा 100% प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है जैगरी में जो वेयर वी कैन हैव प्रोडक्शन स्मूथली. वी आर वर्किंग ऑन इट as well as along with a few more suppliers and manufacturers who are trying to do that. तो जब शुरू किया तो फर्स्ट ईयर एक 6 लाख का टर्नओवर किया. मतलब ये पहले इसमें तो 1000 डब्बों में कुछ हुआ नहीं. नेक्स्ट ईयर जब हमने किया तो एक 6 लाख का टर्नओवर हुआ. देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगले 2-3 साल में 33 lakhs 50 lakhs तक पहुंचे. 50 lakhs का टर्नओवर में, एंड वाज बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ ही था. सो वर्ड ऑफ माउथ से कुछ रिटेलर्स फोन करके बोलते थे. एक रिटेलर से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से जो कस्टमर्स ने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा. इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफी रिलक्टेंट रहते हैं नए प्रोडक्ट्स को लेके, बट यू हैव टू कीप ऑन परसिवियरिंग, यू हैव टू बिलीव इन योर प्रोडक्ट. आपको लगना चाहिए कि आप कुछ ये कर रहे हो. और मुझे वैसे ऐसा लगता था कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो जैसे आज लोग वापस पीपल आर गोइंग बैक टू देयर ट्रेडिशनल रूट्स. आज लोग वापस ज्वार या बाजरा की भाकरी खाते हैं इंस्टेड ऑफ व्हीट. वापस लोग प्रिफर करने लगे. सो चीनी से भी लोग जैगरी की तरफ काफी इसमें आने लगे हैं. एंड द ट्रेंड हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड, बिफोर दैट एज वेल. अभी तो बहुत ज्यादा हो गया आफ्टर कोविड, आफ्टर रियलाइजिंग कि इम्यूनिटी में कितना हेल्प करता है जैगरी. सो पीपल आर मूविंग ऑल द मोर टुवर्ड्स जैगरी. एंड सो इनिशियल ईयर्स में सबसे बड़ा चैलेंज था, जैगरी इज अ सीजनल प्रोडक्ट. सो 5-6 महीने से प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन होता है और अगले 5-6 महीने उसको स्टॉक करके बेचना है. सो प्रोडक्शन तभी इतने बैच में होता नहीं था. एक बैच में हार्डली 25-30-50 किलो निकलता था. एक दिन में अगर 100 किलो निकले तो ऐसा लगता था बहुत प्रोडक्शन कर लिया. आज ऑलमोस्ट 1.5 से 2 टन प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं. It's basically, as I said, a continuous process how we can basically keep refining ourselves, keep improving ourselves. तो तभी ऐसा था कि रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत नाराज हो जाते थे कि बाबा आप लोगों को आदत लगाते हो, फिर साल भर सप्लाई नहीं कर पाते हो तो क्यों देते हो. कुछ लोग they were getting into adulteration, थोड़ा adulteration करके मतलब चीनी वगैरह मिक्स करके करते हैं. आज भी हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स है जो ऑलमोस्ट 50% रिफाइंड शुगर यूज करते हैं. बट आर विजन या एम मतलब सिंपल है कि हमारे दिमाग में यही है कि लोग वापस गुड़ पे आ जाए. सो आई हैड मेड अ स्टैंड कि अगर मार्केट ड्राई भी रहा तो भी चलेगा, बट विल नॉट इंडल्ज इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस. एंड सो एज वो बोलते हैं फाइंड अ पर्पस एंड द मीन्स विल फॉलो. सो धीरे 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 कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं. मार्केट बढ़ता है, आपके पास प्रोड्यूसर्स है, वो फिर कांटेक्ट करने लगते हैं जब आपका मार्केट बढ़ने लगता है. Then we've got our manufacturing partners. After the first 3-4 years, I contacted DMart. DMart में मैंने एंट्री करने की कोशिश की. उसमें भी मुझे 1-1.25 साल लगा.
काफी बार उनके इसमें गया, 30-35 बार तो मिनिमम मैं गया रहूंगा विदाउट एनी एग्जैजरेशन। लेकिन वो वही देखते हैं कि आप में कितना पेशेंस और परसिवरेंस है। सो हर बार मैं जब जाता था वो बोलते थे अगली बार देखते हैं, अगली बार देखते हैं, अगली बार देखते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि ये बंदा सीरियस है, एंड देन दे बेसिकली ट्राई टू शो इंटरेस्ट। सो 1-1.5 साल बाद आई कुड गेट इनटू डीमार्ट। डीमार्ट में क्रैक करना तो बहुत बड़ा चैलेंज था और वो हम लोग ने कर दिखाया, और कुछ प्रोडक्शन वगैरह भी डिसेंट होने लगा था, मतलब सप्लाई बढ़ने लग गया था। उसी टाइम पे जुलाई आई थिंक 2019 या 2019 की बात है, जब कोल्हापुर में फ्लड्स आए थे। उस टाइम पे हमारे कराड़ साइड में भी काफी इसका उसका इफेक्ट हुआ था। और हमारा जो स्टोर किया था हम लोग ने, जो स्टोरेज में जो माल रखा था, तो लार्ज एक्सटेंट वो भी मॉइस्चर वगैरह की वजह से खराब हो गया था। और मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 50-60% माल ऑलमोस्ट खराब होने आया था। एंड आई वाज इन आई थिंक जुलाई में कुछ हुआ था वो, आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई के आसपास। और अगले 3-4 महीने वापस माल सप्लाई करना था। तो वही चैलेंज था कि अब कैसे करें वगैरह। बट देन आई स्टिल रिमेम्बर दैट नाइट इन द मॉर्निंग आई वोक अप एंड जस्ट मार्केट तो इतना बड़ा लिया है, अभी सप्लाई कैसे करेंगे, क्या ये आएगा। सो यू नो आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर और खुद को पूछा कि यार कुशल, योर विजन इज बिगर देन जस्ट यू नो मेकिंग प्रॉफिट्स, या फिर खुद के लिए पैसे बनाने से बड़ा है। तो डेफिनेटली यू नो यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन गोइंग फॉरवर्ड। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर बेस्ट विद एवरी पासिंग डे, यूटिलाइज एवरी डे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस कुछ वीक्स में ही कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसकी वजह से वी कुड यू नो बेसिकली अवॉइड टोटल स्पॉइलेज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। और इनफैक्ट उसके लिए एक एनहांसमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ जैगरी, जिसपे हम लोग ने ये 3-4 साल से काम कर रहे हैं। वी ऑल्सो फाइल्ड फॉर अ पेटेंट, एक 2-3 महीने पहले हम लोग ने उसके लिए पेटेंट भी फाइल किया है। अभी ये पेटेंट ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग अभी साल भर सप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट without spoilage issues. We still have some teething problems, but we are continuously working on it. जैसे ये बड़ा तो मार्केट में जब जाता है हमें लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, आगे जाता है। कस्टमर से जब फंगस के जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि लोगों को केमिकल फ्री गुड, या फिर हमेशा से लोगों को ये लगता था कि जो ब्राइट कलर्ड गुड है या फिर सफेद वाला गुड जो है, जो अच्छा दिखता है, वो गुड अच्छा है। अभी धीरे धीरे लोगों को समझने लगा है कि काला गुड बेटर है। पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दिस। बट केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं होने की वजह से स्पॉइलेज के इश्यूज भी काफी आने लगे थे। A lot of consumers used to call. मैंने जानबूझकर अपना इवन टुडे मैंने एक दूसरा नंबर जो कस्टमर केयर का है वो मेरा ही रखा हुआ है, so that I can talk to the consumers directly. A lot of time consumers बहुत agitated रहते हैं, बहुत aggressively बात करते हैं, you know, at times उन्होंने ऐसा भी बोला है कि कौशल यार आप लोग यू आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल। लिटरली आंख में पानी आता है व्हेन यू नो दैट व्हाट योर विजन इज, एंड जो सामने से जो बोल रहे हैं लोग, तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे खुद को ये करना। बट देन यू हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, यू हैव टू टॉक टू देम। उनको आपका टोन, आपका ऑनेस्टी, आपकी बात करने से समझता है। आई कुड इजीली गिव इट टू माय सेल्स मैनेजर या किसी और को मैं दे सकता हूँ ये काम ये करने के लिए, बट आई नो दैट आई नीड टू स्टे कनेक्टेड विद माय कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और किस तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। आज भी फोन आते हैं। इनफैक्ट ये कॉल आने के पहले मुझे एक मेल आया है, उनको मैंने अभी रिप्लाई करके ही फिर ज्वाइन हुआ। और ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट 90-95% हमको उसका प्रोसेस ये हो गया और मतलब सॉल्यूशन मिल गया है। बट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने की वजह से, एंड बिकॉज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ जैगरी इज वेरी हाई, चांसेस थोड़े बहुत होते हैं, बट यू नो वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, यू नो, पहले इनिशियली कैसा था कि प्रोडक्ट नहीं था, फिर प्रोडक्ट आया, तो फिर मार्केट डेवलप करना कैच-22 सिचुएशन है। पहले मार्केट डेवलप करो या फिर प्रोडक्शन करो। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्केट उतने ही पेस से नहीं बढ़ता है। सो और मार्केट, आप जैसे कभी ऐसा चांस मिलता है जहाँ पे जैसे डीमार्ट वगैरह आ गया, तो आपको प्रोडक्शन पे वापस इमीडिएटली ज्यादा फोकस करना पड़ता है। सो इट्स अ सिचुएशन वेयर every day is a new challenge, every phase is a new challenge, and as you keep growing आपके challenges change होते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि अरे हाँ ठीक है अब सब कुछ सेट है, अब यू नो सब कुछ पायलट मोड पे चला गया है। इट इज नेवर द केस। एंड आज भी हम लोग, मतलब जैसे मैंने 50 लाख से 1 करोड़ पे पहुंचे, वहां से 1.7 करोड़ पे पहुंचे। कोविड हिट हुआ। कोविड हिट के टाइम पे तो मुझे याद है 31 मार्च को
के आसपास जब साल खत्म हुआ एंड कोविड हैड जस्ट स्टार्टेड, आई थिंक 23 मार्च से लॉकडाउन था, आई जस्ट प्रेड टू गॉड कि भगवान सिर्फ इतना करना कि मैं मेरे एम्प्लॉयज का सैलरी दे पाऊँ, इवन इफ आई डोंट मेक मनी फॉर माई सेल्फ, दैट इज फाइन, बट दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन मी, सिर्फ इनके मैं सैलरीज कर पाऊँ इतना सिर्फ कैसे भी करके ध्यान रखना. I pray to God, and to be honest, I'm really grateful कि जब कोविड के टाइम पे लोगों की इतनी सिचुएशन खराब थी, by God's grace we could actually grow our business from 1.7 crores to 3.25 crores, because the requirement for jaggery had gone up. लोग काढ़ा वगैरह लेने में, या फिर चीनी से जो लोग आ रहे थे, इम्यूनिटी पे जो बार बार हैमरिंग हो रहा था, लोगों को समझ रहा था कि बाबा चीनी आपको हार्मफुल है, सो लोग वो मूविंग टुवर्ड्स जैगरी. सो लास्ट ईयर वी डिड 3.25, this year we'll close somewhere around 4 crores. Now we are looking to raise some money to basically, अभी प्रेजेंस हमारा सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स, गुजरात और कर्नाटका में है, and we see a strong possibility of being a national player going forward. तो इसलिए कुछ फंडिंग वगैरह भी रेज करने का काम चालू है. And we strongly feel, I just keep telling myself that I want to be, I myself and Paawak, to be a work in progress all my life. So you don't get complacent, या फिर आप उस मोड में नहीं जाते हो कि बॉस तूने कुछ कर दिखाया वगैरह. Every day should be sort of, you should have that attitude कि आप नया कुछ सीखोगे, नया कुछ लर्न करोगे, so that you have your feet on the ground and you keep working towards making an impact to society. So इसमें मेन हम लोग ने क्या किया, मेरे लर्निंग्स जो रहे सिर्फ मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूँ. थ्री लर्निंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर इज, हैविंग, जैसे मैंने बोला कि एक परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉट ऑफ टाइम्स यू फील कि कोई भी प्रोडक्ट में इसमें फ्यूचर है नहीं है, बट if you stick to it, if you realize, first of all you need to realize कि आपका जो प्रोडक्ट है, whether there is a market for that product, मतलब आप कुछ प्रोडक्ट लाके उसको पुश कर रहे हो, या फिर there is a need for that product in the market where the pull from the consumers will be there. So हमारे केस में ऐसा था कि we got the pull from the consumers rather than we pushing the product. तो पहले मेरा सजेशन ये है कि try to identify a problem, या फिर ऐसा कोई चीज जो where there is a need for the product, एक ये हो जाए, उसके बाद आपको patience and perseverance. उसमें तो मतलब लोग सब बोलते हैं, these words sound fancy, patience and perseverance, but they really mean a lot when you are in this journey. आप समझते हैं कि perseverance का मतलब क्या है, you live that every single day. Second is patience and perseverance. First आप need identify करके try to identify the need and provide the solution. और थर्ड है पीपल स्किल्स. पीपल स्किल्स में आपके स्किल्स विद अक्रॉस द बोर्ड, मतलब आपके जो सप्लायर्स है, या फिर आपके जो बायर्स है, आपकी जो टीम है जिनके साथ आप काम करते हो, आपके जो रिलेशंस है, ओवरऑल आपके पीपल स्किल्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई पर्सनली फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट योर पीपल स्किल्स इज समथिंग which will help you to find a solution for any problem, for any adversities that you come across. आपके लिए वो बहुत जरूरी है. and of late I have started reading a lot. कुछ बुक्स में अगर जस्ट आपको शेयर करना चाहूंगा, एक द लॉ ऑफ सक्सेस करके एक नेपोलियन हिल की बुक है. इट्स बेसिकली अ कोर्स व्हिच आई कीप रीडिंग रेगुलरली. बहुत बड़ी बुक है द लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल, आप वो जरूर पढ़िए. एक हर्ष मारीवाला की हार्श रियलिटीज, जिन्होंने सफल और पैराशूट बनाया है, उनकी बुक बहुत अच्छी है, बिकॉज ही इज एन इंडियन एंटरप्रेन्योर, और उन्होंने कैसे एक कोकोनट जैसे कमोडिटी को एक इतना बड़ा ब्रांड बनाया. बहुत अच्छी बुक्स है. एंड आई रेड फ्रॉम हिज बुक ओनली कि most of his learnings have come from reading. मतलब उन्होंने भी बहुत सारी चीजें after a certain point reading करके की. So I would suggest कि जितना हो सके reading करके learnings करते रहिए. and wish you all the very best. As I said, we are also a work in progress. I want this this सेशन टू बी इंटरैक्टिव. आपके जो भी इश्यूज है, या आप जो भी मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. हाँ कौशल जी. जी सर. आपका तो बड़ा अच्छा लैंग्वेज में आप समझा दिया सब चीज.
PowerPoint. Yes, sir. With a great posture, you have narrated the things very lucid manner. Ji, sir. That such type of presentation, first or fourth court people should learn how to present yourself. Right, sir. And even if you always, you should not depend upon our PowerPoint slide, because now what happened, any presentation, anything anybody is asking, now we are going with our PowerPoint presentation along with the Google search. Okay. Right, sir. Things Right, are- sir. But the way you explain, it is you narrate some practical things. First time I am listening a lecture after a long period of time. I love this type of lecture because today's world is different. If you go to 10 years back, your presentation is always along with your PowerPoint slides. And the Right. people are searching for this. But now the people are telling from their brain, not from any PowerPoint slides. Right, sir. Right. And these things I am very much happy, and you have narrate your experience with a very simple language, Right, sir. Right. not blasting with English. Okay? Right. Ji. So definitely your experience and your thought process will ignite these fourth court people to start their journey, or those who have already started, it will add on to them. Okay? Right. Right. And how are you benefited by a Raftar, Archivary Raftar? Absolutely, sir. Absolutely. What? Sir, so the grant that I have received is Apart from this grant, grant is given by ministry, right, sir. not our contribution. But Right. domain wise, have you benefited, or we have given you some input which help you in your journey? Absolutely, sir. Absolutely. So as I said, grant, as you rightly said, grants is one of the aspects. लेकिन जो लेक्चर्स वगैरह हुए हैं या जो आप लोगों से जो गाइडेंस भी मिला है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है. एंड यू नो, ऐसे प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए इज वेरी वेरी क्रूशियल, जहाँ पे आप जस्ट ग्रांट्स के साथ साथ आपको टेक्निकल गाइडेंस भी जहाँ मिल सकता है, और जहाँ पे अलग अलग पॉइंट, जैसे कल का जो हमारा वीडियो था स्टार्टअप वैल्यूएशन के ऊपर था, कुछ दिनों पहले पेटेंट्स पे था, कुछ प्रेजेंटेशन के हिसाब से था, जो आपके लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है. इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वहाँ पे मुझे बताया गया था कि हाउ यू कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ या क्वालिटी पे कैसे काम कर सकते हैं, वो जो पीरियड था वो पीरियड में भी मुझे काफी हेल्प मिली. एंड द होल टीम ऑफ CIRCOT हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव, सर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी brutally honest in this. I am not praising myself. My team. No, I'm saying the whole team. Yeah. I am not praising myself. My team is working. Actually, Absolutely. the beauty of my team is they are not trained. They are also learning process. I am also learning process. I am basically a scientist. I am not a Right. manager. I am not a startup. मेरा culture भी नहीं था कभी, और I am not coming from a business family. Okay. Right, sir. As we are expert or we are educated people, we are learning the system and advancing ourselves with the time space. Okay. Right, sir. Absolutely. Share all you that a few days back, so perhaps 3-4 days back, one review meeting was held in a ministry under the chairmanship of a secretary. Right. Done some of the startups profile. He found and he asked, what is CIRCOT? That I have not shared with anybody, but what is CIRCOT? Because the way we are evaluating you people, all are very innovative and promising in a business prospect point of view. It's an Right. IAS officer. If the opinion is like that, like this, I came to know this thing from ministry. So definitely such type of lectures are helpful. And now anybody has any question, you just ask to such a beautiful and experienced person like Kaushal Dongare, who is journey is now started, and his journey is a very long journey. Yes, And now you interact with them. Please. Please, everybody should start your thought process and ask, share your experience and question with Kaushal Dongare. Hi, Kaushal. Hello.
This is Ravi Shankar from Bangalore. Yes. Your journey is really inspiring. Thanks for the nice talk. My pleasure. Do you sell, do you have in your product range liquid jaggery also? So liquid jaggery, we do have liquid jaggery in it, but due to some spoilage issues and the shelf life is a challenge in it. So we introduced it, but we've not been able to supply it continuously. In here, in some part of Karnataka, even we at our home use only liquid jaggery, which will be in like honey consistency. So, and years together, it will not spoil. Great. So maybe the method of extraction or preparing that. So it Right. it has got huge market. So now the product has come with liquid jaggery. They will immerse banana stem ka अंदर का एक part होता है ना, that will be immersed, and it's very good for health. And also papaya, raw papaya also immersed in liquid jaggery. So they are selling that. So it will be good idea for you to include in your product range, so that will be Jaggery Man of India, the brand with all type of jaggery and the powder. I have seen so many powder and that your brand. So if you include liquid jaggery and jaggery with this, like different fruit or this one, it will be very good idea. It's the small tips which I wanted to give. Sure. I'll take your number from Hemant sir and I'll get in touch with you separately. Thank you. Because in our region, in coastal part of Karnataka, there is a method of taking that, we call it Joni Bella here. It's liquid jaggery. It will be a thick or more than this one honey consistency, dark colored, and it is very tasty and all. Even I can send you one bottle of that. Sure. I'll get in touch with you. I'll get in touch with you. Sure. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Anybody else? Yeah, I think this is Dr. Sharda and from Hyderabad. Yeah, you have narrated very well, and I think I am able to follow your Hindi very well. I am not that good in Hindi, but you know, the narration is very good. And so we'll definitely congratulate you for taking up jaggery, you know, which is a very important commodity at home. And so you are able to do very well. And I want to know whether you have achieved that white color, I mean, little lighter shade, or is it little darker? So our jaggery is basically on the darker side, as I said, because usually the lighter side or the pale yellowish color jaggery that you get, it's basically loaded with some chemicals like sulfur, which is used for bleaching. So our main some bleach is used. One of our main USPs is, of course, chemical-free jaggery. Yes. Okay. Yes. Okay. I wish you all the best. Thank you very much, ma'am. Thank you. Such at an younger age, you are able to do it. I'm sure that in the future too, you will do it in a better way. You know. Thank you so much. Thank you for success. Thank you. Yes, Anupji, you want to ask something? Yeah, Kushal ji. Hello. Ji. This is Dr. Anup from ICT, Mumbai. Yes, hello. Yeah, interesting journey. I just want to ask, food market, it's very cluttered and it's very difficult to establish a brand. Absolutely. And usually in the organic sector, there are multiple brands. So how do you keep relevant yourself in this competitive landscape? As you rightly said, you know, it's a very competitive market now with jaggery. A lot of competitors have copied our product, but we want to stay ahead of the curve through, you know, providing products with the optimum quality and providing, you know, products which have got enhanced shelf life compared to our competitors. And also going forward, we want to introduce some jaggery based products also. But what is happening is we still have the demand for our normal jaggery cubes is still at such a stage that we've not been able to, you know, give much time towards other products as well. But we see to that, you know, in the near future we'll introduce other jaggery products as well. So as you said, you know, the reason a lot of times your competitors try to break your you know, market by providing substandard products, and this for that you have to be patient and you have to, you know, believe in your products and keep supplying the right kind of products, of the quality products. Over a period of time, the
the consumers who switch to other brands, and when they get experience, they again move towards you. So as it is rightly said, consumer is king, and you have to see to it that you keep providing quality products and keep innovating by introducing new products. So our vision going forward is, of course, jaggery-based products and other types of jaggery. As someone told me, I've suggested that we should come up with liquid jaggery. So that's how we are looking to expand our portfolio. Okay. Second thing, in jaggery, it's a crude form of sugar. I had also worked with Dhampur Sugar Industries regarding sugar refining. I just want to confirm that how you have optimized the batch-to-batch variation in your test, or you don't look at it. It's to be honest, it's very difficult to have a consistent taste as such. You will have some difference in the taste, but across the board, if you select the same kind of variety, like there's this 86032 variety, which is and 92005, these are two sugarcane varieties which are available on a large scale, but the variety of 265 sugarcane is not really good for jaggery. So we see to it that we at least have these two varieties, or if you have the same variety of sugarcane, it helps to a large extent to have a consistent quality of the product. Batch to batch is difficult because, but if you have the same sugarcane variety, as I said, it helps. And a certain SOP, if you have the standard operating procedure where the temperature is maintained, where the crystallization and everything is done, where the drying time is uniform, all these things, if you follow certain processes, it helps to have a decent quality and taste. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Mr. Kaushal, I just would like to just share with you that we have a regional agriculture research station at Anakapalli, and which we have worked, very a lot on jaggery. I think you may come in contact with them for further any of these things which you like to do in the jaggery. Right, ma'am. Sure. I'll RARS, it is called RARS Anakapalli, and everybody knows about it. Yeah. Okay. It is especially for Anakapalli is known for the jaggery from the beginning. So and also this research station has been working on it in the last 10-15 years actually. 15 years back, I've seen some of these. So I think you can come in contact with the scientists there. Okay. Sure, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Yes. Abhijit ji. Abhijit. Yes, yes. Thanks, Mr. Kaushal, for a very informative session. So I think my question is also similar. Like, what are the strategies that you really used to really get into the fight with your competitors and get that market share? Typically in big stores like DMart and so how was that, and how difficult was it initially? Right. So Abhijit, as I said, competition basically followed us because we had the first mover advantage. Since we are the first in the country to introduce these jaggery cubes, we had this advantage of being the first mover in the market. And so getting into DMart and all, as I said, it's basically a game of perseverance, how you can keep on persevering, and they see to it that how determined are you to get into it, or how badly you want it, and how much you can basically work on your margins. They basically try to squeeze your margins as much as possible, that then you have to do reverse engineering and work on your costs to help crack the deal. That's how it is. And with the competitors, as I said, the market is also very big. As I said, even if the competitors come in, we basically are looking at it as, at least the category itself of jaggery cubes is increasing. People moving towards jaggery from refined sugar-based sweets is happening more quickly. And to differentiate yourself, of course, as I said, we're trying to raise funds now because going forward, quality and brand value and marketing aggressively is what will keep us ahead, and innovating with other jaggery-based products and expanding to other regions and penetrating in the regions that we're already there.
Okay, just a follow-up question to that. So when you were actually, first talking with customers to put your products on their shelf, etc., I think that is a very difficult negotiation because they expect you to reduce the price or give them more margins, or maybe take back your products if they don't get sold. So how exactly did you manage to say put a stop somewhere to their expectations and really stick to your you have a good quality or your USPs? So how exactly was that done? So I said, initially I almost contacted uh, around 90 to 100 shops, out of which just a handful of them agreed to keep the product, right? Because they were used to getting hefty margins in jaggery, which was half Correct. kg, 1 kg blocks. But then Yeah. we were basically confident because we had identified that there's a need for the product. No one is there who has provided this product. We had done some testing in our closed group and seen what their response is. So it was basically a step-by-step process. As I said, uh, going to one or two retailers, then slowly the consumers calling you, or the consumers going to other stores and saying कि आपके पास ये good क्यों नहीं, आप ये भी good रखिए. Then this is how they basically started getting in touch. Now then we went to the stores where we were keeping the product and we asked them, can you suggest some good distributor who will keep our product? Because we Okay. going directly to the distributors and retailers basically recommending to the distributors ki acha product hai aap rakhiye makes a huge Hmm. difference when you have that reference, no? So that is how Okay. we basically try to tap and expand our distribution channel. Okay, okay. And one last question is, suppose for 1 kg of similar jaggery, your competitor had say maybe he's pricing it around 100 rupees or something, and I think you have cubes, so then you need to do a little bit more processing. So then how did you competitively price it? Like is it the same cost or you price it a little bit lower? So what was the your strategy? No, in fact, it was the other way around. So when we started in 2014, even then the 1 kilo jaggery blocks were available at 70 to 80 rupees a kilo. My product was 160 rupees a kilo. So Okay. 80 rupees half kg. But Uh-huh. the advantage that I had was I had come up with something innovative. And that is why, consumers basically, sorted that they would want to try a new product. And we had priced it at 80 rupees, anything below 100 rupees, just still, at least people can give it a try. That is how Correct. we decided. So we didn't go with 1 kg because 160 looks very, pricey. That is why we said kg. Okay, okay. I understand it was organic also. So did you get some special certification for that, which you put it on the box of your you know your jar or something, so that is more attractive for the customers? So our USP back then was chemical-free jaggery. So that we mentioned on our pack that it's chemical-free process. It's made with chemical-free process. Even now we are not claiming it as organic because our products are not organic. Even when consumers call me and they say कि आपका good organic है क्या? Just to win some consumers, makes no sense. I just tell them that we want to be very honest. हमारे organic नहीं है. हमारे process में chemicals use नहीं होते. इसका jaggery जो है वो normal है. So that USP we put that it's chemical free, but we do not still claim that it's organic. We are working on an organic variant, but we'll do that once we have the product and certifications are in place. Okay. And what is the normal percentage of returns even today? Like, I'm not saying about the quality, but like normally in the industry, what is normal percentage of returns from all the different stores or etc. So just trying to understand for a product. Right. So with our jaggery, it's almost 1 to 2%, and we are basically, a lot of our competitors don't take the products back, and that is where the retailers are sort of more keen to keep our products because these jaggery cubes across the trade it has got issues of spoilage. Jaggery में spoilage के issues आते ही है, and बाकी लोग नहीं लेते and then they have a problem of facing the consumers. But we are basically want to be here for the long run. As I said, we want to be the
distilleries of jaggery. That is what we're looking at. So jaggery अगर कोई बोला है तो पावक, that is the vision that we have. And since for that we basically kept this 100% return policy. Okay. Thanks, Kaushal ji. I think I missed out on the second book that you mentioned. First one was The Law of Success, and the second one about coconut farming, something, right? You mentioned. No, it's basically by the founder of Marico Parachute and Saffola company, Harsh Realities. Okay, Harsh Realities. Okay. Yes, it's basically an Indian brand. So I thought, the way he built it was very inspiring. Okay, definitely will. I'll go through these books, and I'm really happy. I'm also from Karad, so I'm really happy to see like you are helping, in a way the farmers, local farmers there. So Yes. I'll definitely keep in touch with you. Thanks for your inputs. They are very useful. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. Last question, Mr. Nitin Khade. Nitin ji. नमस्कार कौशल जी। नमस्कार। नमस्कार, आई एम फ्रॉम तासगांव। मैं तासगांव से बिलोंग करता हूँ। हम लोग जैगरी पाउडर की डिहाइड्रेशन करते हैं, उससे भी काफी हद तक अभी असर हो रहा है। लेकिन हमें ये बताइए कि दुनिया बेचने वाले का है, बनाने वाले का नहीं है। आपको ये चैलेंज कैसे आप फेस कर चुके हैं कि हमें अपना माल बेचना है, उस पे आपको क्या मुसीबत, क्या तकलीफें आ गई, ताकि ये आपका एक्सपीरियंस हमें बेनिफिट हो उसका। जी, सो नितिन जी, मैंने वही बोला ना कि मतलब जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ 1000 जार बनाए थे, 500 किलो बनाया था। इस साल समझो हम लोग ने 250 से 300 टन हमारे ब्रांड में बेचा। तो इट्स अ जर्नी, मतलब आप इनिशियली शुरू करते हो। अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसने हमें से बोला था कि छोटे से शुरू करो। एंड आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे रीजन्स देखने से ज्यादा, मतलब अलग अलग रीजन्स में, ऑफ कोर्स इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई एक एरिया आइडेंटिफाई करके उसमें जितना हो सके अगर आप पेनिट्रेशन कर पाओ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइजिंग काफी हो जाता है लोगों में वहां के एरिया में, और वो धीरे धीरे फिर वो जो सर्कल जो है वो बढ़ते जाता है। तो हमारा आज भी फोकस यही है कि हम लोग मुंबई में हमारा पेनिट्रेशन और बढ़ाते जाए। जैसे मैं हुगली या नागपुर में हूँ, लेकिन क्योंकि वहां से कुछ इंक्वायरी आई थी कि हमको आपके प्रोडक्ट्स करने हैं, बट इवन टुडे आवर मेन फोकस और प्राइमरी फोकस इज कि मुंबई में पेनिट्रेशन किस तरह से बढ़ा सके। वी फील कि द काइंड ऑफ बिजनेस दैट वी आर स्टिल डूइंग, आई थिंक वी आर ओनली 15 to 20% ऑफ द मार्केट दैट इज अवेलेबल, द पोटेंशियल दैट वी हैव इन मुंबई। सो आपको मतलब मेरा सजेशन या मेरा एडवाइस यही है कि कोई भी एक एरिया पकड़कर आप वो एरिया में पूना हो गया या फिर कोई भी जैसा एरिया जहां से आप इजीली केटर कर सकते हो और मार्केट धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, पे काम कीजिए। एंड इन द एंड इट्स ऑल अबाउट परसिवियरिंग, मतलब आप कंटिन्यूअसली उस पे काम करते रहिए एंड स्लोली स्लोली आपको कुछ ना कुछ आपकी क्वालिटी की वजह से, आपके जो यूएसपी जो होंगे उसकी वजह से लोग विल स्टार्ट अप्रोचिंग यू। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड मतलब आज हम लोग 250 टन इसलिए बेच पाए क्योंकि 6-7 साल से उसी में लगे हुए हैं, डे इन डे आउट उसी में लगे हुए हैं। वही करके आज यहाँ तक पहुंच पाए, देन यहाँ से आगे बढ़े। बट स्टार्टेड विद 500 किलो ही था, शुरुआत ऐसे ही थी। यस सर, थैंक यू सर। Sunal madam, Mrs. Sonal Chaudhary. I have dropped a question to Kaushal ji. Thank you, Kaushal sir, for giving very nice and honest guidance. My question is, since we are in the rural area, my question is, shall the startup should compromise on selling price if the consumers are from the rural area? Should the startup compromise on selling price if consumers are from the rural area? Yes, in a way, if you see practically if you see, you'll have to do that, because आज जो मैं गुड़ मैं मुंबई में बेच रहा हूँ, शायद मैं वो कराड़ जैसे एरिया में जहाँ पे गुड़ बनता है वहां पे नहीं बेच पाऊंगा, बिकॉज वो प्राइस में कोई लेगा नहीं। बट प्राइसिंग किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए आई फॉरगॉट टू मेंशन वन बुक, वो जो कोई भी बिजनेस में हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका प्राइसिंग किस तरह से होना चाहिए, वेयर फाइनेंशियल प्रूडेंस आपका स्टार्ट से रहेगा। वो है रोमांसिंग द बैलेंस शीट करके, बाय अनिल लांबा। सो मे बी वहां पे आप समझ सकते हैं कि बाबा आप क्या प्राइस पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हो,
भले कम मार्जिन में अगर आपने काम किया, लेकिन वो मार्जिन क्या होना चाहिए, कौन से कॉस्ट कवर होने चाहिए जिसके ऊपर आपने बेचना शुरू किया, तो फिर वॉल्यूम आने के बाद आगे धीरे धीरे आपको वो प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे। उसके लिए बहुत अच्छा ये फाइनेंशियल प्रूडेंस या फिर कॉस्टिंग कैसे करना चाहिए, कॉस्टिंग करने के बाद आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, उसके लिए ये बुक आई एम सॉरी फॉरगॉट टू मेंशन, रोमांसिंग द बैलेंस शीट बाय अनिल लांबा, ये बुक आप जरूर देखिए। सो उसपे से आप शायद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर आपको कम प्राइस में भी बेचना है तो कम मतलब क्या, व्हाट इज दी क्या, किस प्राइस पे आपने कर सकते हैं और किस प्राइस पे आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, ये आपको वो बुक से जरूर आपको गाइडेंस मिलेगा। Okay, thank you. थैंक यू। Okay. Okay. Kaushal ji, last question is from my side. Yes sir. What happened to that Thane trader who challenged you after you expanded your? Sorry sir. That one guy from Thane challenged you that you cannot sell those Jaggery. Yes. Right sir, right sir. So by God's grace he is also doing business with us now, और a lot of Jaggery के जो यहाँ पे बड़े-बड़े जो मतलब Jaggery एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट वगैरह है, they met me 2-3 years back, और उन्होंने भी वही बोला कि बॉस कौशल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जब तुमने शुरू किया था हमें ऐसा लगा था कि यार कौन ये लड़का है, ये मार्केट में नहीं टिक पाएगा, ये धंधे में कभी टिक नहीं पाएगा, लेकिन यू नो यू मेड अ मार्क फॉर योरसेल्फ। और मैंने बोला वही है कि बेसिकली अगर कंज्यूमर इज द किंग बॉस, अगर कंज्यूमर के पास अगर वो नीड आप आइडेंटिफाई करते हो तो हाफ ऑफ योर वर्क इज डन। इफ यू स्टार्ट गेटिंग द पुल फ्रॉम द कंज्यूमर्स, डिमांड आने लगा तो फिर everything else is something that you can work on by your perseverance and hard work. Very good. जी वीडियो ऑन कर दीजिए सभी लोगों का। मैं फिर बाद में धन्यवाद प्रस्ताव रखता हूँ। आज इतना बड़ा जो मैं ऑरेटर, आप मेरा बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग वीडियो ऑन करिए, हम लोग को उसका ये All of you can start your videos. Yes. हो गया ना? वो परमिशन दे रहा है। परमिशन क्यों नहीं देता है? ऐसा होता है। परमिशन दे देंगे ना? Yes. कौन है? मालवानकर जी, आप तो जर्मनी में है, आप लेक्चर अच्छा लगा आपको? Yes, definitely. Yeah. I was not here for some period of time. Yes. It was very informative, very helpful. Very practical also. Yeah, very practical. Yes. Patil ji, how you felt? Mr. Patil? Yes, it is very informative. I like it. But it should be implemented in every startup. Yes, sir. So that we can grow. तो बढ़ सकते हैं हम लोग। Yes. ठीक है? Okay. Thank you, Mr. Kaushal Dongare. Thank you sir, thank you. Young and energetic startups are budding entrepreneur. Thank you sir, thank you. I, on behalf of CIRCOT family, Director CIRCOT, even from ICR Ministry, we are thankful for sharing your practical experience, so to say, in a very simple way, so that it is appealing to all, Right, and people understand it in a very common language. Right sir, right. Thank you for the opportunity sir, thank you. We also in future in different platforms we will invite you for different lecture and experience, because from day to day you will be more experienced in the business. Sure sir. Thank you for your giving your time, energy, as well as good thoughts for igniting our mind and our startup minds. Thank you. Thank you sir. All who are participated today for this lecture, I also, on behalf of our COHORT R-ABI, I am also very much thankful. Thank you. Thank you.
Thank you very much. Thank you. All the best, Kaushal ji. Thank you. Thank you, sir.